सबसे पहले हमें जो सीखना है वो है कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। सब यू वुड बी गिवन एन एंगल, है ना। एंगल का बाइसेक्टर मतलब एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो वो एग्जैक्टली कैसे हम ड्रॉ करते हैं। दूसरा, हमें कंस्ट्रक्ट करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। आपको कोई भी लाइन सेगमेंट दिया रहेगा और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, नाम से पता लग रहा है कि वो 90 डिग्री पे होगा और इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर आपका ये लाइन सेगमेंट ए बी है तो ए बी इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इसको हम एम मान लेते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है। और तीसरा, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे। आपको एक रे दिया है, इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे हम किस तरह से एंगल बना सकते हैं डिफरेंट मेजर का। ठीक है, ये हम सीखेंगे। इसके लिए हम एक मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, ये मैथमेटिकल टूल मिल ही गया तो थोड़ा खेल लेते हैं इससे। आपके पास देखो, किसी भी किसी भी रेडियस का एक सर्कल लीजिए, एक आर्क लीजिए और एक सर्कल बना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये कंपास उठाइए, इसमें इनिशियल रे एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये आपका इनिशियल रे है। ठीक है, अब ये इनिशियल रे से आपको जो रेडियस आपने यहाँ पे लिया था, उसी रे का रेडियस का आर्क लगाते जाना है। यहाँ से उठाइए इस पॉइंट पे, तो एक आर्क। ठीक है, चलो बढ़िया लग रहा है। यहाँ से देखो, ये एक आर्क और लगा दीजिए, सेकेंड हो गया, थर्ड, साथ साथ करिए, फोर्थ। आपके पास ज्योमेट्रिकल टूल्स होंगे, उनको यूज करते हुए आप इसको साथ साथ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो आपने क्या देखा, देखो अगर मैं इसको किसी एक सर्टेन रेडियस का सर्कल लिया और उस सर्कल की रेडियस के बराबर बराबर आर्क हम लोग कट करते गए, तो हमें क्या मिल रहा है। सपोज इस पॉइंट को ओ, ये सेंटर ओ बोल देते हैं, ये ए बी सी डी ई एंड एफ वापस ए पे आ गए। तो 6 आर्क्स लगी है, ए बी सी डी ई एफ। और आपने देखा 6 में अगर हम इसको 1 रिवोल्यूशन पूरा हो जाता है, 6 आर्क में 1 रिवोल्यूशन पूरा हो जाता है। 180 इस तरफ से, 180 इस तरफ, टोटल बन गया 360 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 360 डिग्री 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, तो कितना मिल गया आपको, 60 डिग्री। तो हर एक आर्क आपको 60 डिग्री का एंगल दे रही है। परफेक्ट। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे ये एंगल्स। पहला एंगल इधर मिला, ये आपको 60 डिग्री का एंगल मिल गया, राइट। ए ओ बी 60 हो गया। अगर आप ए ओ सी निकालें तो सिंस ये भी 60 होगा तो 60 और 60 120 हो गया। अगर ए ओ डी करेंगे, डी से ज्वाइन कर दिया तो 180 हो गया। और ए ओ ई 180 से भी 60 ऊपर, ए ओ ई हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। ए ओ ई के बाद ए ओ एफ, दिस इज हाउ मच, 300। दिस एंगल वुड बी 300। अब स्केल से ज्वाइन करोगे इन पॉइंट्स को तो आपको ये 300 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हमारा पूरा जो सर्कुलर रिवॉल्यूशन होता है उसको हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो वापस वही एंगल बन जा रहा है आपका 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही बात है। और इस प्रोसेस में हमने 60 डिग्री बना लिया, हमने 120 डिग्री बना लिया, हमने 180 डिग्री बना लिया। 180 के बाद
240 भी बन गया, 240 के बाद 300, ये पूरा एंगल ए ओ एफ 300 एंगल, ये 300 डिग्री का एंगल हो गया. So we will construct bisector of a given angle. You would be given any angle, any angle. So let's draw any angle. We are given any angle like this, and this is. Now how do we draw the bisector of this angle? इसका bisector कैसे draw करेंगे? Compass, ये जो initial point है उसको लेते हुए और किसी convenient radius का arc ले लिया, और ये आपने इसको जो आपको इनिशियल रे दिया हुआ है उसको नेम कर देते हैं. सपोज ये आपका ओ है, ये ए है. तो ए आपको इनिशियल रे दिया होगा, ओ बी मतलब आपको ओ ए बी, ए ओ बी, ये आपको ए ओ बी ऐसे आपको एंगल दिया होगा. तो आपने आर्क लिया और उसी आर्क को बिना चेंज करे एक यहाँ से लगा दो और दूसरा यहाँ से इसको कट कर देना है. और जब आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये लाइन आपको देगी क्या? एंगल बाइसेक्टर. आप प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हो जो भी आपका ये एंगल होगा, है ना. तो इसको आप यहाँ पे रख के मेजर कर सकते हो. उसको बाइसेक्ट कर दिया होगा इसने. तो कितने डिग्री का है ये एंगल अप्रोक्सीमेटली? देखो जब एंगल मेजर करते हैं तो ये लाइन के नीचे आना चाहिए, ये वाला लाइन है ना. and you can read it approximately 54 55 का है. तो 55 का हाफ कितना होता है? दिस इज 50 55, 55 का हाफ होता है 27. तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 26 27 है ना, 27 के आसपास. दिस इज द बाइसेक्टर. तो वी कैन से आपका जो ए ओ इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सी. आपका एंगल OC is the bisector of angle AOB. What does it mean? This means this angle over here is same as this angle. Okay, so the first construction done. आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल AOC equal to angle BOC, right? Okay. सेकेंड हमारे पास था कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट. वो हम कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? लेट्स सी. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. To draw a perpendicular bisector, you first take a line segment. All right. So let's take a line segment using a scale. You can draw any line segment, or you would be given that line segment. So here we start with 0, and let's say we have drawn it. How much is this? Around 8.8. All right, 8.8. 8.8 line centimeter line segment. And now we want to draw perpendicular bisector. For that, take compass. Again, you need a scale also. And more than half of 8.8. So half of 8.8 would be, we'll have to unlock this, and 8.8 is somewhere here. But we don't need 8.8, we need half of 8.8, more than half of 8.8. So even this much will do, even 6 will do, right? So let's take this much. More than 4.4. Take an arc up. Okay, you need to lock it. Whatever measurement you take, just make sure that it's more than 4.5. So more than half of the given line segment. So you took this arc and take an arc up, and with the same measurement, you need to take an arc down. Okay. Now from the other point, you need to take an arc up here, and an arc down. Now see,
This is not intersecting the arcs. That means we need to extend our arc. Here, put at this point and extend your arc. Clear the initial point. Extend your arc and other side also. Extra arc you can of course erase using eraser. Here it is. Yeah. So join these points. Join this point with this point. So this line segment, suppose the given line segment is AB and this is CD. So CD is your perpendicular bisector, and now you can measure using a scale also. This is half of this, you can see. This was half, exactly half of this, and also ये perpendicular भी है. अगर आप देखोगे तो this angle यहाँ पे how many degree angle you can see? Your baseline should fall on baseline like this. Exactly 90 degree angle. Okay. So this is perpendicular as well as bisector. 90 degree and it bisected. So this is the second construction. And in third one, we are going to do is to construct an angle at the initial point of a given ray. This we have already done. So yet again, suppose you are asked to draw any particular angle. How will you do it? Suppose they ask you to draw 60 degree angle. So how will you draw a 60 degree angle? I think you already know it. So let's clear it. Take initial ray to draw 60 angle. Take the compass, convenient radius, lock it. From here, draw this arc. And as you know, you had seen in the very first activity, the first arc gave you 60 degree angle. All right, join it. So the 60 degree angle is drawn. 60 degree angle is drawn. Suppose you are asked to draw 90 degree angle. So what you will do? How will you draw 90 degree angle? As you know, 90 degree is between 60 and 120. So you take the compass and with the same arc, you are going to draw another arc. So that angle is 120 here, if you join this line. But you don't need to join it since you want to draw 180 degrees. So you'll just use, you're going to draw 90 degree. So you will use this location, take an arc up, and then use this point to draw another arc. Yeah. And that point there will give you a 90 degree angle. When you join this point with this point. Yes, let it extend. So that will give you a 90 degree angle. Okay, let's name it. Here we are. Suppose, let's say this angle over here is, this point is O. Say this is A, this is B, this one is C. You can say angle AOC is equal to 90 degree. AOC is equal to 90 degree. Suppose they ask you to draw 45 degree. Then first you will draw this 90 degree and then bisect 90 degree in two equal parts. We have already learned how to draw the angle bisector. To bisect, what you will do, you will use your compass and put the pin over here and make sure you take more than half of this distance.
So more than half of this distance means this much is okay. So lock it, and taking that arc, you draw an arc over here, and taking the same radius, draw another arc here. Okay. Now that point over there, when you join it with the center O, that will give you the angle bisector. Let me say that, let me name this, and this one is AO. What is this? ABC, and let me say D. So you can say angle of AOD would be 45 degrees. And if they ask you again, bisect this 45 degree, what will you get? When you bisect this 45 degree in two equal parts, half of 45 is 22 and a half. So let me say that angle AOE, which is 22 and a half, 22 and a half degree. So how will you draw an angle of 22 and a half? Simple, take the compass and take a convenient radius, I will say, and that is more than half of this arc which you are going to bisect. So if more than half is full also, I can take full as well. Then we will take an arc. We have to find a place inside between at the center of this angle because you're bisecting it. So take an arc over there, and another arc you have to put it somewhere in between. So this one, and when you join this, you get an angle of 22 and oh, oh, yeah, here it is, 22 and a half. So let me name this. Next point over here is E. Somewhere there is E, because this ray goes to infinity. So these 2 points, whenever we are marking them, they are on the ray somewhere. Even the A is somewhere here. So the ray will go infinitely in the pointed direction. Okay. So we have drawn angle, these particular angles, 90 degree, 45 degree, 22 and a half degree. So basically, using the knowledge of angle bisector, you can construct any angle. For example, if they ask you, okay, draw angle of 75 degree, now you will see, where does 75 degree lie? 75 degree will be between 60 and 90. So if you could draw the bisector of the angle, this, which is 60 and 90, you must be at angle 75 degree. So what you will do is, to draw 75 degree angle, you are going to bisect which angle? This angle over there. Okay. So take compass, and from there, let's take a different color. So the bisector will be somewhere here between 60 and 90. So this angle is 60. So you take an arc over there. Another arc. Yes, over here. And when you join these 2 points, that angle there would be, which one? That angle would be angle AO. Yeah, let me say this point here is F. Angle AOF would be 75 degree. Okay. So we have drawn so many angles in just one construction. So likewise, you can draw any angle using knowledge of angle bisector, and also the activity we did in the starting, like we took a circle and then 6 equal part. Every arc is giving you 60 degree angle, and that way we can construct all these bisectors or certain geometrical angles. All right. So taking this into knowledge, we will do further constructions, that is from the exercise 2. But before that, you are advised to do exercise, complete exercise 1. Just construct all the angles, and then we will proceed to exercise 2. Okay.